Yes, so welcome back. Here we are going to discuss about the meaning, the definition, the scope and the features about the macroeconomics. So remember students, micro I bole to individual, macro A bole to aggregate. So you can see the definition which is given by Hansen uncle and Carl Shapiro. You all have to study the definition of Carl uncle. It deals with the functioning of the economy as a whole. Because it's macro, we are not having a microscopic approach. We are having the economy as a whole. So see the scope. So it's dependent micro. याद कीजिए, अब मैं हर एक पॉइंट में आपको रिलेट करवाने वाली हूँ. Price theory, as we discussed, this is the income theory because we have to study the relationship between the income and the employment level, the general price level and the inflation overall. वहां पे इंडिविजुअल प्राइसेस था, यहाँ पे जेनरिक प्राइस लेवल आ जाएंगे. वहां पे आप लोग को था इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द होल नेशन. सो नेशन का ग्रोथ, जीडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. देन वहां पे था आपको फैक्टर प्राइसिंग. यहाँ पे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, लैंड का रेंट, टोटल रेंट व्हेन वी टॉक अबाउट. सो इट इज अबाउट द मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देश की इनकम, देश का खर्चा, देश का सेविंग्स, देश का प्रोडक्शन, एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द नेशन. For your understanding, general knowledge. Come on, now moving to the important part, which is the features. चलिए, आपने पढ़ा था माइक्रो में स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट वहां पे आपने पढ़ा था पार्शियल इक्विलिब्रियम. देखिए यहाँ पे क्या आ गया, जनरल इक्विलिब्रियम. सो देयर इट वाज स्टडीइंग द पार्शियल इकोनॉमी. एक एक करके इकोनॉमी को स्टडी करना, यहाँ पे जेनरिक स्टडी करना, राइट स्टूडेंट्स. इंटरडिपेंडेंसी वहां पे इट वाज बेस्ड ऑन अजम्पशन स्टूडेंट्स. यहाँ पे इट इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऑल द वेरिएबल्स बीइंग इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. देश की इनकम बढ़ी तो तेरी इनकम बढ़ी, तो तेरा सेविंग्स बढ़ा, तो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा. देखिए इंटरडिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ. I hope you are getting it. Then you have the general price level, price theory. Here you have the general price level, the income theory. So income theory is dependent upon the level of employment that we have. Better the level of employment, better the output, better the income, right students. Here it's based on growth models. It's not related to one individual or one firm or one company. It's with respect to the whole nation, right? So the growth models. Then it is policy oriented. देश की policies, RBI की policy, monetary policy, fiscal policy, tax policy, so many policies. Again, that is with respect to the whole nation, not with respect to one individual. There it was slicing method. Here we have the lumping method, that we are going to study the economy as a whole, not about a particular tree but about the whole forest. There it was study of individual units. Here it is study of aggregate units. सबको एक साथ, सब institutions, सब teachers, सब products, सब students, everyone together. That is a study of aggregates, right students. So वहाँ पे एक और point एक है, वहाँ पे it was limited scope students. यहाँ पे we can write it as wider scope. That's an add-on point that you can write it. Moving with the last part, which is the importance of macroeconomics. सब माइक्रो को पढ़ना जरूरी है स्टूडेंट्स. ऑफ कोर्स मैक्रो को पढ़ना भी इक्विवेलेंटली जरूरी है. हमें इकोनॉमी का फंक्शनिंग समझ में आएगा. दैट व्हाई इज देश का इनकम पढ़ना जरूरी, टू नो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू हैव द कंपैरिजन कि हम कहाँ खड़े, बाकी के देश कहाँ खड़े. सो कंपैरिजन के लिए काम आएगा. देन देयर आर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, लाइक इफ यू रिमेंबर कभी खुशी कभी गम, the growth, the peak, the depression, the trough, the recovery period. So macroeconomic study करके हमें overall fluctuation समझ में आएंगे, and therefore studying macro is equivalently important. We can come to know about the national income of our nation, so that we can have the comparison. हम last year से कितने बढ़ गए, हमारा GDP कितना बढ़ गया. Then we have the economic growth, which is a pathway to lead the economic development, which is our final destination. Right, then we have the performance of the economy, where we can evaluate about the performance, how are we compared to the last year. Study of the macroeconomic variables, national income, national savings, national kharcha, and everything in detail, right. Then we have the level of employment, by which we can determine the income theory. In ऐसे जैसे unemployment में हमने बोला था, the urban unemployment is increasing compared to the rural, so of course we have to work on new employment opportunities, so that then we can level up the income in the nation, we can level up the GDP. So the level of employment is also going to be important, and hereby we complete the macro part as well students. So did you see in this particular chapter, which is the most easiest chapter of the whole syllabus, where you did the comparison between the micro and the macro. अब जिसने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, चैप्टर 1 जब आप एंड में करोगे ना, तो आपको और इजी हो जाएगा. बिकॉज जब बाय द टाइम आप सिलेबस पढ़ने के बाद 1 पे आते हो,
तो मेरा आपको ये कहना होगा कि चैप्टर 2 में जब आपने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ लिया, 3A में आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, 3B में इलास्टिसिटी पढ़ ली, 5 में ओलिगोपोली पढ़ लिया, मोनोपोली पढ़ लिया, तब चैप्टर 1 जब फीचर्स पढ़ते हैं ना तो इजी हो जाएगा। चैप्टर 6 में जब आपने इंडेक्स नंबर कर लिया, नेशनल इनकम पढ़ लिया, पब्लिक फाइनेंस पढ़ लिया, कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ लिया, फॉरेन ट्रेड का पढ़ लिया, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स इजी हो जाएगा। सो माइक्रो एंड मैक्रो डिस्टिंग्विश which is covered in your features. 4-mark question. Important scope, it may not come, but moreover scope is an objective oriented part, but give importance to features. Is it clear? All the best students. Like, subscribe, comment करते रहिए, दोस्तों की मदद करते रहिए। Thank you.